पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था बताओ, क्या पढ़ा था श्रना? What we have read? Ma'am, can I summarize from third paragraph? From the beginning क्या पढ़ा था हमने बताओ? चलो कल वाला बता दो. From the beginning, leave it. कल क्या पढ़ा था? Don't read from your book. बुक से रीड मत करो. Sound looks straight. Now, what we have read? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Priya 1302. कल क्या पढ़ा था? What we have read yesterday. पढ़ा था कल कुछ? आप थे क्लास में? No, ma'am. मेरी सिस्टर की क्लास लगी थी. Sister is in which class? Your sister is in which class? Ma'am, fourth. Okay, Pratyush was in the class. Yes, Pratyush, 1242. Pratyush? Yes, ma'am. Yes, beta, but we have read yesterday. Ma'am, once upon a time, when there was a Dr. Delicate, he not stop at the mid of night. He make a mixed experiment, and he drank and he with his poison drank. Okay, then He see the mirror. His reflection was changed into green color. Okay. Very good. Then what happened? As soon as he drank that potion, then what happened? Then he shocked by my sulfur is by my by my color was green color. Ma'am, can I tell? Wait a minute. Let Pratyush. Pratyush, no, nobody will disturb. No. Pratyush, as soon as he drank the potion, you know that he concocted the potion. Then, as soon as he drank the potion, then what happened to him? तो क्या हुआ? Ma'am, he had a very pain. बेटा ऐसे don't listen. I asked from Pratyush. Only Pratyush will give the answer. Okay. Then Pratyush क्या हुआ उसकी body में क्या हुआ? उसके head में something happened in his body. What was that? Ma'am, Then और क्या हुआ? Yes, pain was there. Okay, his whole body was racking with pain. उसको लग रहा है पूरी body जो उसमें pain हो रहा है. Then his mind was paining हो रहा था. उसको लग रहा था कि his head is paining. Then he was also convulsing. वो कांप भी रहा था. means shaking. He was also convulsing. Yes, ma'am. Okay, Akshita Rana. 1455. Yes, ma'am. Ma'am, there was a Dr. Jekyll, and he decided to conduct the experiment on himself. And ma'am, he make a potion and quickly drank it. After some time, he feels some pain in the body, and he was convulsing, and he think that the world was spinning around. It seemed that he was, and actually, and he would. Okay, Priya, 1302.
बॉडी में बहुत पेन हो, एंड आफ्टर दैट उसको क्या लगा, देन आफ्टर सम टाइम ही इट सीम दैट उसकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है, एंड ही इज मोर हैप्पी, ही इज हैप्पियर एंड यंगर, उसको लगा वो यंगर हो गया है, युवा हो गया है, एंड also happy feel हुआ. Now and with that यहाँ से वृत्ति 2440 हाँ, start from here. Accents. Yes, ma'am. Ma'am, and with that, Page number 102. Page number 102. yes, ma'am. And with that sense of freedom come in illness to be License. with. Yes, ma'am. License is written. License to be with. I felt I could indulge in any fantasy or forbidden desire without restraint. Okay, I now went to my now what? room. अब उसको क्या लगा, फ्रीडम, उसको क्या लगा, वो बहुत हैप्पी है, यंगर, उसको लगा कि अब उसको एक लाइसेंस मिल गया बुरा बनने का. विकेट, उसको लगा कि वो कोई किसी भी फैंटेसी मीन्स एज एनीथिंग मीन्स जो मन काल्पी इमेजिनेशन, वो किसी भी इमेजिनेशन में इंडल्ज हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, और कोई भी ऐसा डिजायर जिसको फॉरबिडन मीन्स दैट इज नॉट allowed, that is not allowed, that is called forbidden. Okay, तो किसी भी डिजायर में जो भी डिजायर उसको नहीं करना चाहिए मीन्स दैट इज फॉरबिडन, और उसमें क्या, विदाउट रिस्ट्रेंट, सेल्फ कंट्रोल. ओके, कंट्रोल के वो किसी भी बुरे काम में इंडल्ज हो सकता है, बुरे काम में इन्वॉल्व हो सकता है. जैसे उसने पोशन को वो ड्रिंक किया तो उसको क्या लगा, उसको एक लाइसेंस मिल गया कि वो किसी भी फैंटेसी में, किसी भी बुरे काम में वो इन्वॉल्व हो सकता है. Read करो, read it. I rushed to my room. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I rushed my room and looked at myself in the mirror. Mind that was rude. That was rude. So That was it. Facing the height for the first time, he was a young and hideous chapter, much smaller than I recognized, and then I recognized the evil written on this face, and I welcomed him. He was also a part of me I had not yet acknowledged. Okay, now. I know that. Okay, beta, let me explain. Okay, now, then, as soon as he drank that potion and as soon as he felt all those happenings, then he rushed to his room. फटाफट अपने रूम में दौड़ा. He rushed to his room and उसने जब उसको अपने खुद को मिरर में देखा, and then it was a rude shock. बहुत उसको shocked, he was shocked. क्यों? जब उसने देखा तो देखो उसका फेस कैसा है यहाँ पर, ये ऐसा है, and in the mirror how he is visible. तो उसको क्या लगा कि अब वो first time he was facing Edward Hyde. अब खुद तो डॉक्टर किल है, लेकिन इन द मिरर एडवर्ड हाइड उसकी डार्क साइड थी, जो उसका जो बुराई थी, दैट ही वाज फेसिंग दैट, कन्फ्रंटिंग. ओके, आमना सामना. अब वो फेसिंग एडवर्ड हाइड फॉर द फर्स्ट टाइम. अब देखो एडवर्ड हाइड ये सामने. ओके, देन अब वो कैसा लगा, कैसे वो बहुत उसको यंग लगा और वो मुझसे थोड़ा सा स्मॉलर लगा. नाउ ही इज सेइंग दिस थिंग. फिर उसके फेस जो इविल था बहुत बड़ा. जैकिल वाज एबल टू सी कि उसके फेस कितना इविल, कितनी बुराई उसके फेस में लिखते हुए पिक्चर से लग रहा, पता है कितना ये
खराब है ना, इविल है। तो ये क्या है, आई रिकॉग्नाइज द इविल रिटन ऑन हिज फेस बट ही वेलकम हिम। अब डॉक्टर जेकिल ने क्या किया, उसको बहुत वेलकम किया। क्यों? क्योंकि वो उसी का एक पार्ट था जिसको अभी तक ही हैज नॉट एक्नॉलेज, मीन्स ही हैज नॉट एक्सेप्टेड। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेड। तो he was also a part of me, I had not yet acknowledged. Acknowledge means मैंने स्वीकार अभी तक accepted नहीं किया था। हाँ, yes Vritti, read it. Yes, ma'am. Tracy, I I know that everyone dislikes I but I did but I didn't but I didn't. It was a ritual of my it was an act the at achievement for me of which I was filled with pride. I began to openly challenge and others and overthrow Jacqueline's goodness through the poor, evil, and hardened. The switching back of force was much more executive Exhausting than I than thought. I thought. Thought I was Hmm. influenced. Though I had instructed my servants. Vritti not audible. Vritti, Kriti 1251. Kriti 1251. Always know he Hmm. of myself. I Vritti, nothing is audible, beta. Pallavi Thakur 1288. You know this thing that everyone is like Heidi. Heidi तो किसी को पसंद नहीं आया because वो क्या है, he is an evil person. तो वो तो उसको किसी को नहीं पसंद, but I didn't. क्यों? मुझे तो बहुत अच्छा लगा because it was my part. तो now Heidi, ये जेकिल बोले कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा. It was a relief to be openly evil. अब ये एक relief था कि मैं बिल्कुल खुल के मैं बुरा बन सकता हूँ. It was an act of achievement for me, for of which I was filled with pride. Now it was his achievement. उसने he concocted a potion, he drank the potion. तो उसको वो बुराई जो थी वो अलग आ गई. It means उसकी जो थी वो साइड जो थी वो डिफरेंट थी. तो उसको लगा कि सभी को तो वो बुरा लगेगा, बट उसको तो वो अच्छा लगा. देन व्हाट हैपन, इट अब वो बोलता मैं बहुत, आई वाज फिल्ड विद प्राइड, मुझे बहुत अपने ऊपर गर्व हुआ कि मैंने इसको क्रिएट किया. फिर आई बिगेन टू ओपनली चैलेंज एंड ओवरथ्रो जैकिल्स गुडनेस थ्रू द प्योर इविल ऑफ हाइडी. अब ये क्या बोलता है कि मैं क्या बहुत ज्यादा बुरा, ओपनली मैंने उसको चैलेंज कर दिया. मीन्स किसको चैलेंज किया? डॉक्टर जेकिल को. डॉक्टर जेकिल बहुत अच्छा था, लेकिन मैं क्या करने लगा, मैं बुराई के थ्रू आई वाज चैलेंजिंग डॉक्टर जेकिल. मीन्स मैं बुराई की तरफ ही जाता रहा और डॉक्टर जेकिल जो है वो पीछे रह जाएगा. ओके होता है ना कई बार बुरी चीजों की तरफ मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड, हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो वैसे ही इसके साथ हुआ. ये बहुत अच्छा, ही वाज अ गुड डॉक्टर, अ रिसर्चर, बट थ्रू दिस हाइडी को जब उसने एक्सपेरिमेंट किया और हाइडी उसके सामने आ गया, तो वो हाइडी उसके ऊपर ज्यादा असर करने लग पड़ा. हाइडी overthrow Dr. Jekyll. Heidi overthrow the goodness of Jekyll. जो Jekyll बहुत अच्छा था, उसकी goodness को उसने हटा दिया. Now, the switching back and forth was much more exhausting than I thought. अब वो क्या बोला, कई बार वो डॉक्टर जेकिल दिन में ही डॉक्टर जेकिल, रात को वो हाइडी बन रहा है. तो ये स्विच जो था, मतलब एक आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी, गोइंग थ्रू वन आइडेंटिटी टू अनदर आइडेंटिटी, इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव. बहुत टायरिंग था, बहुत थक जा रहा था. ठीक है, जितना उसने सोचा था, इट वाज मोर एग्जॉस्टिंग देन दैट. दो आई हैड इंस्ट्रक्टेड माय सर्वेंट्स टू ट्रीट हाइडी विद utmost respect and obey his orders so he could move freely in and out of my home. I became a slave to his freedom. Now अब देखो बेटा, था वो सेम, वही था. ठीक है, he was the same.
हाइडी भी वही है, जेकिल भी वही है, बट जेकिल इज अ गुड पर्सन। वो दिन में जेकिल है और शाम आते थे ही बिकेम हाइडी। नाउ अब वो सोच रहे कि ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत एग्जॉस्टिंग है। मींस मैंने आपको आई टोल्ड यू टू वॉच दैट मूवी अपरिचित, बोला था ना आपको मूवी देखने के, वो क्या था, सेम वही था, बट एकदम सम सर्कमस्टांसेस ऐसे आते थे कि वो वायलेंट हो जाता था, एंड सम सर्कमस्टांसेस ही बिकेम इनोसेंट। तो पर्सन वाज सेम, बट वो जो उसकी सर्कमस्टांसेस थे वो अकॉर्डिंग टू दैट ही वाज चेंजिंग लाइक दैट। अब हाइडी, अब ये क्या बोल रहा है डॉक्टर जेकिल कि मैंने आई हैड इंस्ट्रक्टेड, उसने अपने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्ट किया था कि ये जो है मेरे सर्वेंट जो है वो मिस्टर हाइडी को रिस्पेक्ट दें, दे शुड ओबे हिज ऑर्डर्स, और वो ताकि वो मजे से ही कुड मूव फ्रीली, घर के अंदर बाहर मजे से आ सके वो हाइडी। और मुझे लगा कि उसकी जो फ्रीडम है उसके आई हैव बिकम हिज स्लेव। Yes, Pallavi, page number 103. Come to page number 103. Yes, ma'am. What was worse, I had to finance him. I also made him an heir in my will. Much to everybody's astonishment, drunken and depraved Hyde was let lost all over London. Okay. Hyde Now, also did okay. What was worse? Okay. बैड वर्स वर्स्ट होता है ना, बट लेकिन सबसे पूरा क्या था, आई हैड टू फाइनेंसिंग मींस मुझे उसको पैसा भी देना पड़ता, दैट वाज मच वर्स। आई ऑल्सो मेड हिम एन हियर इन माई विल, अब मैंने अपनी विल में, अपने इस विल में उसको मैंने अपना हेयर बना दिया, मीन्स उत्तराधिकारी बना दिया अपनी वसीयत में, हेयर में। और सभी एवरीबडी बहुत सभी हैरान हुए कि अपनी वसीयत में इसने हाइडी को अपना हेयर बना दिया। और वो ड्रंकन और डिप्रेव मींस इमोरल, ओके, डिप्रेव मींस इमोरलिटी, भ्रष्टता जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्रेव्ड, ठीक है। अब हाइडी पूरे लंदन में घूमने लग पड़ा, मींस जो इविल साइड थी डॉक्टर जेकिल की वो पूरे लंदन में घूमने लग पड़ी। अक्षिता, आर यू राइटिंग समथिंग? No, ma'am. इट्स, मुझे लग रहा है कि आप कुछ लिख रहे हो अक्षिता। What you are writing? होमवर्क तो नहीं स्टार्ट कर दिया अभी? No, ma'am. मैम बात श्योर हो रहा है। Okay, okay. Yes, Pallavi, next last paragraph. Yes, ma'am. Hyde also did face some consequences for his actions. One night he knocked over a child whose family threatened him so much he had to pay them off. So he had to use Dr. Jekyll's signature. That was a difficult time for me, and I realized not only was Hyde taking over my life and well-being, this was going to cost me in more ways than one. Okay, now I told you this thing earlier before the beginning of this chapter कि ये 2 pages are, they are taken from that, और पूरी आपको story it is not clear from that, these 2 pages, ठीक है। तो if you want to clear your, मैंने बोला था go through the net, और इसकी stories को ये देखो लिखा ना, adapted from Dr. Jekyll and Mr. Hyde, the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, you go through that, तब story clear होगी आपको। अब ये 2 pages में जो story थी, ये 3 pages में जो story तो मैंने आपको एक्सप्लेन करती, बट आई आल्सो कि हाइडी को करता था, उसके एक्शंस को, जो वो काम करता था, ही हैड टू फेस दैट कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट उसको फेस करने पड़े। क्यों? नाइट व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, उसने चाकू मार के एक बच्चे को, फैमिली ने उसको थ्रेटन किया, हिज फैमिली थ्रेटन हिम सो मच, उसको इतना धमकाया उसकी फैमिली ने कि ही हैड टू पे देम ऑफ, उसको मींस उसका भुगतान करना पड़ा, उसको पेमेंट करनी पड़ी। देन सो ही हैड टू यूज डॉक्टर जेकिल सिग्नेचर। अब वो था हाइडी मींस वो इविल उसके अंदर ज्यादा था, बट ही यूज्ड टू साइन लाइक डॉक्टर जेकिल, उसको डॉक्टर जेकिल के सिग्नेचर करने पड़ते थे। अब नाउ दिस लेटर है, ये सारी स्टोरी एक लेटर के अंदर चली है। You know this thing from the beginning, it is written that it is a letter. Letter is, कौन read कर रहा है? Who is reading this letter? Sharanav? Sharanav, who is reading this letter?
कौन रीड कर रहा है लेटर को, ये बताओ। Ma'am, can I read? नहीं, stand up, stand up. Who is reading this letter? डॉक्टर जैकिल रीड कर रहा है अपने लेटर को। यस अंशिका डोगरा। अंशिका, Mr. Lanyon. who is reading? Ma'am, Mr. Lanyon. Mr. Lanyon is reading. Ma'am, Mr. Utterson. Mr. Utterson. I told you in the beginning that Mr. Utterson is the main character in this story. He is friend of Dr. Jekyll. ओके, लैनियन का तो वो लेटर था, लैनियन के पास लेटर था, वो अटरसन ने ले लिया और अटरसन उस लेटर को, ही इज रीडिंग दैट लेटर एंड ये सब कुछ कि डॉक्टर जैकिल, ये हाइडी कौन है, वो सब उस लेटर के अंदर है। मैंने अगेन बोला स्टोरी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटे एक बार उसको पढ़ लेना। ओके, अब दिस अटरसन इज रीडिंग लेटर। आई टोल्ड यू दिस थिंग दैट दिस अटरसन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। और वो क्या सोचता है, ही थिंक्स दैट Jekyll and Heidi are two different characters. वो ऐसा सोचता कि Jekyll and Heidi are two different characters and this Heidi is blackmailing Dr. Jekyll. वो उसके माइंड में ये था कि Heidi is blackmailing Dr. Jekyll, but lastly उसको लग जाता है पता, consequently he comes to know this कि Dr. Jekyll और Heidi both are same. ओके, बोथ आर सेम, उसको लास्ट में लग जाता है पता कि ये सेम ही है। अब ये लेटर से लग गया पता कि वो पोर्शन, ही ड्रैंक द पोर्शन, उसको सामने अपनी इविल दिखाई दिया, इविल क्रिएचर। नाउ अब दिस थिंग हैपेंड, ही नॉक्ड ओवर अ चाइल्ड, उसने एक बच्चे को मार दिया एंड हिज फैमिली थ्रेटन्ड हिम एंड ही हैड टू पे देम। That was a difficult time for me and I realized not only was Heidi taking over my life and well-being, this was going to cost me in more ways than one. Okay, and last it is written कि मुझे क्या लगा कि सब कुछ easy होगा, लेकिन नहीं, जो डॉक्टर जैकिल था he was overpowering me, मेरे पर उसका ही पावर चल रही थी, मीन्स वो मेरे अंदर वो हावी हो गया था और मुझे लगा कि वो मुझे बहुत ज्यादा वेज में he is going to affect me, एक वे में नहीं बहुत ज्यादा वेज में he is going to affect me. Okay, now question answer practice on 1 I have sent already. Okay, मैंने ऑलरेडी इसको सेंड कर दी, तो क्या करें, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी आपने काम नहीं किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट। योगेश 3313 प्रैक्टिस जोन 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस मैम। यस योगेश। मैम, करो इसको। what was a big shock for Mr. Lanyon? बताओ इसको, क्या शॉक था, बिग शॉक था? What was a big shock for Mr. Lanyon? Why? Okay, it is written in the first paragraph. That first paragraph में लिखा है आपकी, देखो योगेश। Responsible for the death of the terrible. And it is clear from Mr. Lanyon letter that Heidi and Jekyll were the same person. Okay, योगेश करो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करो। Yes ma'am. What was a big shock for Mr. Lanyon? Why? Okay, Yogesh. Okay, Daksh. The big shock was not responsible for the death of that tribal culture in his office. Okay. And वो सेम पर्सन। ओके, दोनों क्या थे, सेम पर्सन थे। Which was not present yesterday.
Priyanshi and Divyansh. Priyanshi, second question. Priyanshi, second question. पता ही नहीं. Sejal 3295. Sejal 3295. Yes, ma'am. Yes, बेटा, second question. Read it. क्या लिखा है? Yes, ma'am. Ma'am, what story would the ma'am? What story would the world be told about the disappearance of Dr. Jekyll? क्या स्टोरी वर्ल्ड को बताई जाएगी अबाउट द डिसअपियर? डॉक्टर जैकिल तो डिसअपियर हो गया, ठीक है. अब ये है कि मिस्टर हाइडी वाज डेड एंड डॉक्टर जैकिल तो डिसअपियर हो गया. देन वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को व्हाट स्टोरी वुड बी टोल्ड? पूरे वर्ल्ड को क्या स्टोरी बताई जाएगी? That Dr. Jekyll has disappeared under strange circumstances. बस आपकी बुक, according to your book only this is written कि Dr. Jekyll जो disappear हो गए अजीब से under strange circumstances. It is written. Only this much will come. Okay, according to your chapter. Chapter के accordingly यही आंसर बन रहा है इसका. Shreyana, question number 3. What kind of background did Dr. Jekyll come from? Very easy question. Very easy question. What kind of background did Dr. Jekyll come from? Ma'am, concocted person. Sorry? Ma'am, concocted person. Sharana, I didn't get what you are saying. What kind of background did Dr. Jekyll? जोर से बोलो. Little bit louder. Ma'am, concocted person. Be a little bit louder. Ma'am, concocted person. Question number 3. What kind of background did Dr. Jekyll Okay, come from? now. कैसे बैक? Ma'am, concocted person. Doctor. So I'm not getting Sharana. Ma'am, the person. Ma'am, the person. The portion, what the portion? Ma'am, किस बैकग्राउंड से था? मीन्स वो कैसी बैकग्राउंड से, उसकी फैमिली कैसी थी? बैकग्राउंड मीन्स आई कम फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड. उसने स्टार्टिंग में बताया आई केम फ्रॉम ए प्रिविलेज बैकग्राउंड मीन्स जहाँ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं. तुम क्या पोर्शन, व्हाट यू आर सेइंग दिस पोर्शन? वृत्ति. क्वेश्चन नंबर 4. Was Dr. Jekyll an honest man? तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर जेकिल ऑनेस्ट था? हाउ कैन यू से दैट? क्या लगता है, था डॉक्टर जेकिल ऑनेस्ट? yes. Anybody? Yes. Okay. Yes, according to you, he was an honest man. How can you say that? कैसे बोल सकते हो तुम? Ma'am, because Because क्यों लगा? morning to evening he was good and honest man and Not that. What you're saying. Your next question, next chapter is very interesting. 9th chapter. 9th का जो आपका 10th chapter आएगा ना, that is more interesting. Most interesting chapter of your syllabus. The discovery book का जो most interesting chapter है, your lesson number 10. When it will come, you will definitely enjoy that lesson. But first of all, Vritti, what answer you gave? According to you, Dr. Jekyll was an honest man. Okay, how can you say that? मैं तो बोल रही हूँ कि he is not an honest man. आप कैसे बोल रहे? He is an honest man. Ma'am, can I tell? Yes, Akshita. Ma'am, Dr. Jekyll is an honest man. Is an honest man. Okay. Was is written, na? Was a question में? Yes. You will say Ma'am, yes.
Ma'am, because he was a good doctor and served my patient. According to you, he was an honest man. What according to Priya? Was Dr. Jekyll an honest man? तुम्हें क्या लगता है? Honest था वो? Priya, what are your views? Daksh, 3315 Daksh, what do you think? Dr. Jekyll honest था? He was an honest man? Yes, ma'am. Okay, how? कैसे honest था वो? देखो बेटा, Dr. Jekyll was not an honest man because he did not want to admit that he has also a dark side. ठीक है, वो admit नहीं करना चाहता that he has also a dark side and those two, and he is leading two parallel lives. वो इस बात को admit नहीं करना चाहता था that he is leading with two parallel lives. So he was not an honest man. Okay. Dr. Jekyll was not an honest man because he didn't want to admit that he is also having a dark side and he is leading two parallel lives, but both were starkly different. प्रियांशी अब क्लासेस नहीं लगाई, ये बोलेंगे मैम हमने क्लास अटेंड नहीं की, वी डोंट नो द स्टोरी. अभिमन्यु 1252, अभिमन्यु 1252, क्वेश्चन नंबर 5. Yes, ma'am. बेटा क्वेश्चन नंबर 5. मैम क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. क्वेश्चन नंबर 5. Yes, ma'am. Why was it so difficult for Dr. Jekyll to use himself as a subject for his experiment? Why was it so difficult for Dr. Jekyll to use himself as a subject for his experiment? Now, अब तुम मुझे बताओ why it was so difficult for him? क्यों difficult था? मैम उसके लिए मैम You know this thing that he experimented on himself. उसने खुद के ऊपर experiment किया. मैम उसने मैम अपने आप पर ही मैम एक्सपेरिमेंट कर लिया था मैम. But question is why was it so difficult? इतना difficult क्यों था for Dr. Jekyll? क्योंकि उसको एक experiment करना था. He wanted to do some experiment. ठीक है, तो उसने खुद पर किया last में, लेकिन it was difficult for him. उसके लिए थोड़ा difficult था कि खुद के ऊपर सब experiment करे. Why? क्यों था उसके लिए difficult? क्यों था बेटा? Anyone from your class? कोई बता दो. निशाली, क्यों difficult था? बेटा देखो, it is also written on page number 101. ठीक है, page number 101. Why it was difficult? Because he found that certain compounds change the composition of human body. कि कुछ compounds ऐसे हैं जो human body को change कर देते हैं. So it was difficult for him to use him as a subject. Question number 6. I have said. Now, beta, come to adverbs. कल हम करेंगे adverbs. Okay, from tomorrow from school we will take your classes. तो कल स्कूल से ही करेंगे हम ये adverb. What are these adverbs? Okay. चलो adverb मैंने पहले भी आपको बताया है. क्या होते क्या adverb प्रियांशी? होता क्या adverb? What do you mean by adverb? Ma'am, दक्षता. Priyanshi, let Priyanshi try. Priyanshi, what do you mean by adverb? I will explain, but today I want to know from you. होता क्या adverb? Excuse me, ma'am. Yes. मैम हमारे कल से स्कूल लग रहे हैं. No बेटा, no notification. जब when your school will be opened, okay, you will get proper information. अभी तक कोई notification नहीं है.
Okay, ma'am. We will inform you. Don't worry about that. Now, yes, anyone? होता क्या है? Okay, Daksh. A word that modify a verb is called adverb. Okay, that's your answer is correct. But modify का मतलब क्या है? Yeah, Ma'am, your answer. Upgrade करना. Upgrade Modify करना. करना, कुछ add करना, कुछ change करना. Simply you can say add करना, qualify करना, add करना. Okay, that's your answer is. Ma'am, a word that adds more information about place, time, manner. Okay, these are types of adverbs. कौन से adverb of time है, adverb of place है, adverb of frequency. These are types. But main thing is what is an adverb? होता क्या है adverb? Adverb क्या होता है बेटा? It modifies a verb. Suppose if I say she is beautiful. Suppose I say this thing. ठीक है? She is beautiful. अब beautiful क्या है? What is beautiful? Suppose I say Sejal is beautiful. Suppose मैंने ऐसा बोल दिया Sejal is beautiful. Now Sejal, what is Sejal? Sejal is a noun. Okay. अब beautiful क्या है? What is beautiful? Manner. मैंने पूछा beautiful है क्या? Conjunction है, preposition है, pronoun है, verb है. What is beautiful? Sejal ही बताएगी. Sejal is beautiful.